Hi guys, welcome back to my channel. आज का वीडियो is very off from the other videos. I think शायद नाइट रूटीन का मैं फर्स्ट वीडियो कर रही हूँ. So without any further ado, let's get started. So first off, I'll start by removing my lenses. So I'll just go and wash my hands and be back. So I'll just remove my lenses now. It is very important to wash your hands before removing your lenses because हम लोग के हाथ में बहुत germs होते हैं, and I know my nails are also very big, but because of the shoot मुझे नाखून रखने थे. Then I had a nail campaign from Sugar Pop, so I had to keep my nails. That's why I am using my nails. Otherwise, the best practice is to cut your nails. Especially अगर आप right hand से उतारते हैं तो you need to cut short your nails and keep it very clean while wearing your lenses. Second, I'll move on with the remover. So this is my cleansing remover, and I will be using cotton for this because today I am wearing a waterproof mascara and उसके लिए मुझे cotton ही use करना पड़ेगा. That's why just a minute. So I have my cotton here, and इसका भी मैं 2 पीस करके यूज़ करती हूँ so that बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आए. And because आज मैंने लगाया है mascara and waterproof mascara, so I need to use this one. Because otherwise एक तो है ना, whenever you are applying waterproof mascara, don't just rub it, otherwise सारी lashes टूट के हाथ में आ जाएंगी. You have to be very careful with your lashes if you are using any waterproof mascara or something. मैं सेम कॉटन दूसरी आई पे भी यूज़ कर रही हूँ. सो ये मैं ऐसे करती हूँ, मैं रब नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट डैबिंग इट सो दैट ये पूरा ऐसे निकल जाए. और इसी तरह मेरी आईज पे भी बहुत सारा आ चुका है. यार ये मस्करा बड़ा पसंद है मुझे. हैव यू सीन द फुल रिव्यू ऑफ दिस मस्करा? If you have not seen the full review of this mascara, go and watch. मैं यहाँ नहीं डाल रही. I'll put it in the end of this video. Go and watch that video because वो बहुत ही अच्छा video है, and mascara is amazing. Like trust me guys, it is one of my most recommended product on my page. ऐसे ही मैं इसको पूरा क्लीन कर लेती हूँ फटाफट से, या थोड़ा पास ले लेती हूँ. Okay, I'll keep it here. This will be the perfect way to show you guys what I'm using. First off, I'm using this cleansing balm, and cleansing balm बहुत सारे अलग अलग brands की available है. The best one is by Clinic. If you have a good budget, go for it. Otherwise, Plum is giving an amazing product. ये मेरा दूसरा बॉक्स है. तीसरा मैं ऑलरेडी ला चुकी हूँ because मेरा ये ख़त्म होने वाला है. So yes. So I'm rubbing it over my hand and then I'm applying it. Oh, I'm so sorry. और इसी टक्कर से मेरा ऑडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गया और मुझे पता भी नहीं चला. Anyways, let's move forward. So I have already used the cleansing balm on my face. And before washing my face, I'm using the makeup cleansing pad. Yes, it is damp. मेरा डेली का रूटीन यही रहता है. I don't change my skincare routine often. I love using these pads as they are reusable, removes makeup very easily, and it's not at all harsh on skin. And अब मैं face wash कर चुकी हूँ यहाँ पे. I still have some kajal on, and because it was a gel based kajal, it will slowly go away. I don't use makeup remover on my waterline. Toners are important in skin routine but technically not necessary. It restores the pH levels, and yes, don't forget to buy it according to your skin. मुझे toners use करना बहुत पसंद है. I find it refreshing. So yes,
toners I definitely include in my skin routine. Next up, hyaluronic acid. This has definitely changed my skin. If you have seen my previous videos, this is my 4th bottle of hyaluronic serum. This serum instantly hydrates the skin, minimizes the appearance of fine lines and makes skin smooth and supple. You have to take a little amount on your palms, warm it up and then apply on your damp skin. And guys, mano na mano, I have definitely seen visible changes on my skin with this hyaluronic acid. आज ही मेरा गला ख़राब है, सो मेरी आवाज़ बहुत ही भारी लग रही है, सो प्लीज़ बेयर विद मी. एंड देखो, एज के साथ क्रो फीट, फाइन लाइन्स सब बढ़ता है एंड डार्क सर्कल्स भी. सो आई एम अप्लाइंग दिस आई सेरम हियर. प्रोडक्ट डिटेल्स इस वीडियो के एंड में है एंड थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है. अब मसाज कर रही हूँ. दिस मेक्स माई आईज फील बेटर एंड थकान कम हो जाती है. Whole day I'm on screen, so yes, this makes my eyes feel good. Otherwise तो बहुत ही ज़्यादा थकी रहती है आंखें. So yes, I definitely use eye creams on daily basis. Applying my favorite cream here. This is my 3rd pack, so now you know my skin loves this, but unfortunately it's now out of stock in India, so I don't know what I'll be using next. But yes, this has been my favorite night cream till date. Massage nicely onto your skin. Yes, your under eyes and neck too, because even neck needs hydration, and hydration helps your skin keep supple and hydrated. एंड सारे स्टेप्स के बीच में मैंने 2 से 3 मिनट ब्रेक लिया था. ऑब्वियसली इस वीडियो में नहीं दिखेगा वो, बट आई डेफिनेटली टेक ब्रेक सो दैट स्किन पूरा एब्जॉर्ब कर ले. एंड बचा हुआ मैं अपने हाथों पे मसाज कर रही हूँ, बिकॉज हैंड्स ऑल्सो नीड हाइड्रेशन एंड जो क्रीम है वो हम यूज़ कर सकते हैं. Last but not the least, applying lip balm. As I use matte lipstick, so moisturizing my lips at the end of the day is very important, and you can use any lip balm. And finally, I'm done here with my routine, and let me give you the product details. The first one is the Aqua Lens Solution. I love this one because it has that moisturizing effect and eyes don't get dry even after wearing lenses for long hours. So yes, this one is a must have. The second one is the Garnier Micellar Oil Infused Water for removing the waterproof mascara and all, and I've been using this from years. I don't even remember now. The third one is my favorite. This is the Plum Cleansing Balm, एंड ये डेफिनेटली एक अमेजिंग रिप्लेसमेंट है क्लिनिक के क्लेंजिंग बाम का, बिकॉज क्लिनिक क्लेंजिंग बाम इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड दिस वन इज़ क्वाइट. आई एम यूजिंग द प्लम Bulgarian Valley Rose Water Toner. There are different types of toners available in the market. Choose according to your skin type. Mine is dry, so I'm using this one. I use hyaluronic acid by The Ordinary, and आँखों के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए एंड क्रो फीट के लिए आई यूज़ कैफीन सोल्यूशन बाय द ऑर्डिनरी अगेन. Oh, finally, my cream is here. This is the Black Tea Youth Enhanced Night Cream by Innisfree. Till date, my most loved night cream. And yes, coming to the end of this video, I would just say buy products according to your skin type. My skin is dry. Actually very dry. Anyways, बहुत लेट हो गया है, अब मैं यहाँ से निकलती हूँ. If you like this video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe. I hope you like this video and I hope to see you in my next. Till then, bye.